Hi everyone, welcome back to the Twin Bros YouTube channel. I am Sakshi Singh and I am here to begin CUET series for psychology with all of you. So just to begin the series about myself, I am Sakshi and currently I'm pursuing BA Psychology Honours from Lady Shri Ram College for Women, Delhi University. My CUET score in 2022 was overall it was 800 on 800 and in psychology it was 200 on 200. So we'll be practicing several questions over here and all of these questions for each chapter जो हम यहाँ पे cover करेंगे उनमें हमारे previous year questions सारे crucial questions हमने सोच समझ के रखे हैं ताकि आपका comprehensive thorough revision हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं we are going to do today chapter 1 variation in psychological attributes तो चलिए शुरू करते हैं the first question is distinctiveness and variations among people's characteristics and behaviors is referred to as A. Individual attributions. B. Individual differences. C. Individual variations. And D. None of the above. So I guess इसका आंसर हमारे चैप्टर के टाइटल में ही है individual differences, right? Moving on to the next question, this is an assertion and reasoning based question. तो assertion है several psychologists hold the view that situational factors influence behavior more than personal traits. Okay, and the reason is situationism posits that situations and circumstances can be highly powerful at times, leading individuals with differing personality traits to respond similarly to them. तो हमारा A ऑप्शन है कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second है कि A and R दोनों सही हैं but R is not the correct explanation of A. C is कि A is true but R is false and D A is false but R is true. इसका आंसर होगा A because A and R both are correct statements और R जो है वो A को explain कर रहा है कि क्योंकि sometimes situations can overpower आपके traits भी इसीलिए several psychologists favor situational factors over personal traits. Next question. What is the primary purpose of assessment in psychology? To predict future behavior based on current attributes, to measure psychological attributes of individuals, to intervene and effect changes in behavior, and D, all of the above. देखने वाली बात यह है कि ये तीनों according to NCERT are purposes of assessment in psychology, but primary पहला basic purpose is to measure the psychological attributes of individuals. जब आप attributes measure करोगे तभी तो आप future behavior को predict कर पाओगे, intervene कर पाओगे वगैरह वगैरह. So answer is B. Next is, which of the following statements explain the nature of intelligence correctly? A global measure of cognitive competence. B, capacity to understand world, think rationally and effectively use resources. C, indicator of an individual's ability to profit from schooling. And D, all of the above. तो इसका आंसर होगा D, because ये सारे ही statements intelligence के बारे में बिल्कुल correct हैं. Next question, which of the following attributes are not measured by psychological tests? Aptitude, values, physiological stress, personality. I think ये बहुत easy है. Physiological stress which is physical stress, हमारी body से related stress. अब वो psychological tests क्यों measure करेंगे? Value वाले option से confuse नहीं होना. There are psychological tests that assess your values और इसीलिए aptitudes, values, personality इन सबको NCERT में एक जगह लिखा गया है कि ये सब assess किए जा सकते हैं. Next question. A researcher is studying real-time naturally occurring interactions between a parent and a child by recording their behavior systematically and objectively. They are most likely to be using A. Self-report method, B. Observation, C. Psychological test and D. Interview. Real-time naturally occurring behavior जहाँ भी study करा जा रहा है, the answer is observation. तो correct answer observation है. Next question. Who among the following psychologists defined intelligence as the ability to judge well, understand well, and reason well? The simplest definition of intelligence: A. Alfred Binet, B. David Wechsler, C. Howard Gardner, and D. Robert Sternberg. तो इसका आंसर होगा अल्फ्रेड बाइने बिकॉज गार्डनर एंड स्टेनबर्ग ने जो डेफिनेशंस दी थी दे वर मोर इन रिलेशन विद द एनवायरनमेंट. वेशलर की वाज अगेन थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन थी बट बाइने जो था उन्होंने ज्यादा फोकस किया था अब ऑन जस्ट जजिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग. ओके,
आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच साइकोलॉजिस्ट सजेस्टेड दैट एन इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडेप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स इट। अब आ गई एनवायरनमेंट। किन लोगों ने, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस का नाता एनवायरनमेंट से जोड़ा था? देखते हैं। वेशलर एंड बाइने, ए। बी, जेंसन एंड बाइने, सी, गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग, एंड डी, वेशलर एंड स्टर्नबर्ग। एज आई जस्ट सेड, इसका आंसर होगा गार्डनर एंड स्टर्नबर्ग। Next question, which of the following theories do not belong to the information processing approach? Options हैं structure of intellect model, B, theory of multiple intelligences, C, triarchic theory, and D, past model of intelligence. इसका आंसर होगा structure of intellect model। बहुत ही easy question है because ये जो structure of intellect model है ये psychometric approach में आता है, बाकी सब information processing approach में आते हैं। Next question. Who is credited as the first psychologist to formalize the concept of intelligence in terms of mental operations? A. Howard Gardner, B. David Wechsler, C. Alfred Binet, and D. Robert Stenberg. तो अब इसका आंसर है एल्फ्रेड बाइने, क्योंकि इन्होंने मेंटल ऑपरेशंस के टर्म में इंटेलिजेंस को पहली बार डिफाइन किया था। ये आपके आईक्यू वाला जो पार्ट है उसमें आई गेस एक्सप्लेन भी है। Okay, now next question is about the unifactor theory कि unifactor theory conceptualize करती है intelligence को as, अब ये एक set of statements दे रखे हैं, इनमें से जो correct है about intelligence जैसे कि unifactor theory ने कहा है, जो कि Alfred Binet ने दी है, हमें वो select करना है। A, as a multifaceted set of abilities, B, as a dynamic interaction between genetic and environmental factors, C, as a combination of cognitive and emotional skills, and D, as a single set of abilities applicable to solving various problems. Multifaceted set of abilities तो नहीं बोला, यूनिफैक्टर नाम ही बता रहा है, यूनि यानी वन। बी, डायनेमिक इंट्रैक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक्स की कहीं बात नहीं हुई इस थ्योरी में। सी, कॉग्निटिव एंड इमोशनल स्किल्स, अगेन इमोशनल स्किल्स की यहाँ पे कहीं इस थ्योरी में कहीं बात नहीं हुई। एंड डी, सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज, यूनी फैक्टर, यूनी यानी वन, एंड सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज जो इससे हर तरह की प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इज डी। Next question is, Dash proposed the two-factor theory of intelligence in 1927 by employing a statistical technique called Dash. अब टू-फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने एम्प्लॉय की थी और उन्होंने क्या टेक्निक यूज की थी इसको फॉर्मुलेट करने के लिए? पहला ऑप्शन है हावर्ड गार्डनर, फैक्टर एनालिसिस। दूसरा, चार्ल्स स्पेयरमैन, रिग्रेशन एनालिसिस। सी, चार्ल्स स्पेयरमैन अगेन विद फैक्टर एनालिसिस, एंड डी, लुई थर्स्टोन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसका आंसर है अगेन बहुत easy, Charles Spearman. Using factor analysis, he made the two-factor theory of intelligence in 1927. Make sure कि आपको हर थ्योरी के प्रोपाउंडर जिसने वो थ्योरी दी है, अगर ईयर गिवन है तो ईयर, एंड कोई टेक्निक्स हैं उससे रिलेटेड कि इसके हेल्प से ऐसे बनाया, तो ये चीजें आप याद रखिए जस्ट ऑन योर फिंगर टिप्स। Moving on to the next question, according to Spearman's two-factor theory, factor of intelligence consisting of mental operations which are primary and present in everyone is called A, specific factor या S factor, B, domain specific factor, C, generalized factor or G factor, and D, unique factor. Now, mental operations which are primary and present in everyone यानी सब में है, generally present है, primary है, तो वो स्पेसिफिक फैक्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑब्वियसली दो फैक्टर्स की बात की है इस थ्योरी ने, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो एस फैक्टर तो हो नहीं सकता, वो तो स्पेसिफिक है, हर किसी में डिफरेंट होता है, स्पेसिफिक होता है। सो ऑब्वियसली इट इज द जनरलाइज्ड फैक्टर और जी फैक्टर विच इज सी ऑप्शन। ओके, moving on to the next question, Louis Thurston proposed a theory of intelligence that consisted of how many primary mental abilities? Very easy, but let's see the option: 6, 4, 7 and 10. So Louis Thurston की जो theory थी उसमें it was theory of 7 primary mental abilities. So the answer is 7. Next question, which of the following is not one of the primary mental abilities proposed by Thurston? A, emotional intelligence, B, perceptual speed, C, spatial relations, and D, word fluency. Again, very easy. Emotional intelligence was introduced by Peter Salovey and Mayer. This perceptual speed, spatial relations and word fluency, ये सब primary mental abilities Thurston ने दी थी. Emotional intelligence is not one of them, so that's the answer. Next, the hierarchical model of intelligence consisting of level 1 and level 2 was devised by A, Spearman, B, Thurston,
C. बाइने, D. आर्थर जेनसन। आंसर इज आर्थर जेनसन। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, थर्स्टन ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एंड बाइने ने यूनिफैक्टर थ्योरी। तो आर्थर जेनसन इज द करेक्ट आंसर. Next, we have an assertion reasoning question again. Assertion है level 2 abilities are far more higher level and advanced than level 1. Okay. Reason है at level 2 input is transformed to produce an effective and different output. अगेन हमारे पास वही 4 ऑप्शंस हैं. पहला है कि ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, आर करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है ए को. बी ए एंड आर दोनों ट्रू है बट आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सी ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स एंड डी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. इसका आंसर अगेन इज ए, बिकॉज ए इज सेइंग कि हाँ लेवल 2 एबिलिटीज आर मोर एडवांस देन लेवल 1, बिकॉज एट लेवल 2 इनपुट जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और डिफरेंट होता है, जबकि लेवल 1 में क्या होता है कि इनपुट इज समहाउ सिमिलर टू द इनपुट. ओके, सो A is the answer. Next, in Guilford's model, what do operations refer to? तो operations COP model जो हम Guilford का कहते हैं उसमें operations को what do they refer to? So let's look at the options. A is the nature of materials or information. B, the form in which information is processed. C, what the respondent does, such as cognition and memory recording. And D, the classification of intellectual traits into units, classes, and relations. इसका आंसर है C, what the respondent does, such as cognition and memory recording. Because हमारे पास इसमें तीन sort of 3 components होते हैं थ्योरी में. पहला है कंटेंट विच इज द नेचर ऑफ मटेरियल या इनपुट. ओ विच इज ऑपरेशंस, माने जो रिस्पोंडेंट ऑपरेट कर रहा है ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंटेंट्स को. एंड पी इज द प्रोडक्ट जो कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है. तो जो रिस्पोंडेंट करता है कंटेंट पे दैट इज कॉल्ड ऑपरेशंस, जैसे कॉग्निशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग. Next question. If a researcher wants to understand how individuals process semantic information like sentences, which category of Guilford's model would they focus on? A. Operations. B. Contents. C. Products. And D. Factors. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं semantic information like sentences. If you remember, semantic information किसका subtype था? Yes, contents का. तो इसीलिए इसका आंसर होगा contents. Next, which intelligence type is associated with skills involved in the production and use of language, making individuals sensitive to different shades of word meanings? Options are spatial, B. Interpersonal, C. Logical mathematical, and D. Linguistic. Now, this is a question from Howard Gardner की multiple intelligence की theory. So, use of language, production of language, and sensitivity to different meanings of words. तो इसका आंसर आई थिंक इज वेरी इजी, linguistic intelligence. Next, an individual is adept at thinking critically and is able to swiftly solve abstract and mathematical problems. Although they feel that they are not able to easily form rapport or build relationships with other people. They are likely to be high in dash intelligence and low in dash intelligence. Now, they have given you a case study. And based on that, they are asking that an individual is high in this intelligence and low in this intelligence. The options are spatial and intrapersonal, B. Musical and naturalistic, C. Logical, mathematical and interpersonal, and D. Linguistic and interpersonal. तो हमें कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग हो रही है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, विच मीन्स दे आर हाई इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. And on the other hand, they find it difficult to form rapport, build relationships. मतलब interpersonal intelligence is lower. Intrapersonal is within ourselves and interpersonal is like between people. So interpersonal intelligence कम है और logical mathematical ज़्यादा है. तो option is C, which is our correct answer. Next, pilots, sculptors, painters, and architects are likely to have highly developed intelligence in which area? A. Musical, B. Bodily kinesthetic, C. Spatial, and D. Naturalistic. The answer is very easy. Spatial, which is space-related intelligence, जो कि pilots, sculptors, painters और architects में होती है, क्योंकि वो space को manipulate करते हैं, imagine करते हैं. Okay, next question. According to Robert Sternberg's triarchic theory of intelligence,
Which type of intelligence involves the analysis of information to solve problems and is crucial for success in schools? Analysis of information to solve problems and success, academic success. Options are componential, B, experiential, C, contextual, and D, creative. Answer is very easy, that is componential intelligence. Componential intelligence is the traditional intelligence जो कि schools में academics में बहुत ज़्यादा जिसको सराहा जाता है, right? So answer is A. Next, Niharika is the go-to person for her friend group as she is able to quickly tackle daily hassles and unexpected emergencies. Her friends describe her as street smart and tell her that she could be a good business person. What intelligence is she likely to possess? Now, this is a PYQ from CUET, पहले previous years का. Options are contextual, B, experiential, C, practical, and D, both A and C, which is contextual and practical. तो हम यहाँ देख रहे हैं निहारिका is able to tackle daily hassles and emergencies. Street smart is a keyword which has been used for a particular intelligence in Robert Sternberg की theory, and she has been told that she has a good business sense. इसका आंसर है ए एंड सी, कंटेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बिकॉज ये दोनों एक ही इंटेलिजेंस का एक्चुअली नेम है. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड इन दिस थ्योरी, जस्ट रिमेंबर इट वेरी वेल. कंटेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल आर एक इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल एंड क्रिएटिव आर एक इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल and analytical are एक intelligence. So the answer is A and C. Next question, assertion and reasoning. Assertion, people high in experiential intelligence are high on creative performance. Reason, the componential intelligence is supported by the meta, knowledge disposal and performance components. So options हैं A, again, A and R are true, R is correctly explaining A. B, A and R are true, but R is not the correct explanation. C, A is true, R is false, and D, A is false, R is true. अब हो सकता है आप में से कुछ लोग आंसर बहुत जल्दी से B कर दें कि दोनों ट्रू हैं, but R is not correctly explaining A. But if you look ध्यान से, reason में it is componential intelligence is supported by meta, performance component and knowledge disposal component, and it's not knowledge disposal, it's knowledge acquisition, the correct one, right? तो इसीलिए A true है but R false है, so the correct answer is C. Next, how does an optimal level of arousal contribute to intellectual activity according to the past model of intelligence? By interfering with attention, by enabling simultaneous processing, by focusing attention on relevant stimuli, and last, by promoting successive processing. तो अराउजल कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे इंटेलिजेंस में? तो इसका पास्ट मॉडल हमें क्या कहता है? पहले आप अराउज होते हो, उसके बाद आपका अटेंशन जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद प्लानिंग होती है. तो अगेन आ गया ना, अराउजल के बाद आता है अटेंशन. तो अराउजल जब एक ऑप्टिमम लेवल का अराउजल हो जाता है, हम अराउज होते हैं, तो हम अपना अटेंशन कहीं पे लगा पाते हैं, डायरेक्ट कर पाते हैं जो हमारी स्टिमुलाई है उस पर. तो द आंसर इज सी, बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन रेलेवेंट स्टिमुलाई. Next question, which real life scenario best illustrates the role of simultaneous processing as described in the past model of intelligence? Simultaneous processing. तो यहाँ पे हमें कुछ real life activities दी हैं, हमें देखना है कि किसमें simultaneous processing use होती है. A, memorizing a list of vocabulary words for a language exam. B, solving a complex math problem by breaking it down into smaller steps. C, grasping the relationship between abstract figures in a visual puzzle. And D, planning a study schedule to prepare for multiple exams over the course of a week. अब A और B में हम lists A में list यूज हो रही है, तो दिस इज सक्सेसिव प्रोसेसिंग. बी में स्टेप्स यूज हो रहे हैं, अगेन क्रोनोलॉजिकल, तो ये भी सक्सेसिव है. डी में प्लानिंग की बात हो रही है, तो दैट इज द प्लानिंग कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस. तो बचा सी, जहां पे आप रिलेशनशिप्स परसीव कर रहे हो, तो द आंसर इज सी फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग. Next, how does planning function in the past model? How does planning function in the past model of intelligence? A, by integrating information into meaningful patterns. B, by setting goals and evaluating their effectiveness. C, by focusing attention on relevant stimuli. And D, by remembering information serially. Answer बहुत easy है, by setting goals and evaluating their effectiveness. So the correct answer is B. नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंस. अब ये IQ से हमारा आ रहा है, जो IQ वाला इंटेलिजेंस का सेक्शन है.
इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स reared together, ओ सॉरी नेचर एंड नर्चर वाला जो ये ओके सो हमारा ये क्वेश्चन नेचर एंड नर्चर वाले सेक्शन से आ रहा है. द इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स reared together correlate almost dash while those of reared in different environments correlate up to dash. A 0.72, 0.60, B 0.90, 0.72, C 0.25, 0.90 and D 0.72, 0.90. अब इसमें आप देखेंगे कि बेस्ट तो ये रहेगा जहाँ पे भी कोरिलेशंस आ रहे हैं, डिजिट्स आ रहे हैं, आई एडवाइस कि आप जितना हो सके जस्ट रिमेंबर देम, ट्राई टू लर्न देम. पर अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो इसे कैसे टैकल करेंगे? इंटेलिजेंस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स रियर टुगेदर. अब ऑब्वियसली आइडेंटिकल ट्विन्स जिनको साथ में रियर किया गया है उनका कोरिलेशन इंटेलिजेंस का ज्यादा होगा, जबकि आइडेंटिकल ट्विन्स जिनको डिफरेंट एनवायरमेंट में रियर किया गया है उनका थोड़ा कम होगा, राइट? जिसका मतलब ये है जो फर्स्ट फिगर होनी चाहिए वो हमारी हायर होनी चाहिए. तो वो हायर कौन कौन से पेयर्स में है? ए में है एंड बी में है. ए एंड बी, सी और डी एलिमिनेट हो गए. ए एंड बी में से हम अपना आंसर चूज कर सकते हैं. एंड फिगर्स अगेन आपको याद करने पड़ेंगे जो न्यूमेरिकल है, इट्स इंपॉर्टेंट. सो द आंसर इज 0.90 and 0.72. So 0.90 is for identical twins reared together and 0.72 for identical twins reared in different environments. Next question, again assertion and reasoning. A, studies on adopted children indicate that environment has considerable influence on intelligence. Reason, as adopted children grow, their intelligence tends to remain similar to that of their biological parents. Now we know the options, but let's take a look. A is correct that yes, environment has considerable influence, but R is saying that जैसे जैसे adopted बच्चे grow होते हैं उनकी intelligence वैसी ही रहती है जैसी biological parents की थी, which is false, क्योंकि their intelligence tends to move towards their adoptive parents. So the answer is C. A is true and R is false. Next question. If a child has a mental age of 12 and a chronological age of 10, what is their IQ? IQ का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, which is MA upon CA into 100. तो 12 upon 10 into 100 would be 120. Answer is 120. Okay. Now the next question. IQ scores tend to be distributed in the population dash. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा. A, symmetrically around the mean in a bell-shaped curve. B, with most people having average scores and a few people having skewed scores. C, neither A nor B. And D, both A and B. तो obviously yes we know that normal curve में IQ scores जो होते हैं एक bell shaped curve में होते हैं, symmetrical होते हैं. तो A is correct. B, most people having average scores and few people having skewed scores. Skewed मतलब बिल्कुल जो extreme में lie कर रहे हैं, normal में average में lie नहीं कर रहे. So this is also true because we know that most part of the normal curve is lying in the center और बहुत थोड़ा सा percentage is lying at the extreme ends, which means both A and B are correct. So the answer is D, both A and B. Next question. Who devised the concept of intelligence question? तो options हैं A, Alfred Binet, B, William Stern, C, Theodore Simon and D, Lewis Terman. आंसर इज विलियम स्टर्न. हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना. बाइने एंड साइमन ने मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट दिया था, बट विलियम स्टर्न ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया था. So we do not need to get confused in this. Next question. According to the American Association on Mental Deficiency, what are the three basic features defining intellectual disability? A, above average intellectual functioning, independence in adaptive behavior, and early onset of deficits. B, below average intellectual functioning, deficits in adaptive behavior and manifestation during the developmental period. C, high IQ scores, deficits in language and motor skills and moderate supervision needs. And D, varying intellectual functioning, sub-average social skills and adaptive deficits in adulthood. अब इसमें हम एलिमिनेट अगर करें तो ए में ये कह रहे हैं अबव एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, विच इज रॉन्ग, सो ए इज एलिमिनेटेड. सी की बात बी की बात करते हैं. बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यस. डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर, यस. डेवलपमेंटल पीरियड में मैनिफेस्ट हो रहा है, यस. सो द आंसर इज बी. सी में हाई आईक्यू स्कोर्स मेक्स नो सेंस एंड डी में अगेन
It makes no sense. So B is the correct option. Next question. Nirman is a 27-year-old. In childhood, he learnt language and motor skills quite late. Now, he has a spouse and children and works in a soap making factory. Nirman is likely to be in which category of intellectual disability? A. Mild. B. Moderate. C. Severe. And D. Profound. Now, we know severe and profound intellectual disability में आप families hold नहीं कर पाते and आप occupations भी pursue नहीं कर पाते हो. So it has to be either mild and moderate. The answer of this question is mild because moderate disability may be you can only learn simple social skills वगैरह. You cannot hold a family. So the answer is mild. Next question. While X is a musical prodigy and a famous singer, Y is an academician who has been an exceptional athlete and guitar player in his school years and is now getting trained as a pilot. Which of the following statements is true? A. X is intellectually gifted while Y is talented. B. X is talented while Y is intellectually gifted. C. Both of them are intellectually gifted. And D. Both of them are talented. अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में जो डिस्कस्ड है कि इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस और टैलेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हाईलाइट किया है और उसी पे क्वेश्चन फॉर्म किया है. हम जानते हैं इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस इज व्हेन यू आर गुड एट सेवरल थिंग्स. And talent is when you are good, exceptionally good in one single area of competence. So while X is actually good at music alone, Y is good at academics. He's also an athlete. He is a musician, and now he's getting trained as a pilot, which tells us that Y is intellectually gifted while X is talented. So the answer is B. Next question. Dash was the first one to study intellectual giftedness by following the lives of 1,500 children with IQs of 300 and above. A. Robert Terman. B. Louis Thurston. C. Lewis Terman. And D. Theodore Simon and Alfred Binet. तो इसका आंसर अगेन बहुत इजी है. टर्मिन ने स्टडी किया था ल्यूइस टर्मिन ने इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड चिल्ड्रन को. अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है, लग रहा है कि इन क्वेश्चन से कुछ कॉन्क्रीट प्रैक्टिस हो रही है, रिविजन हो रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें. मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड ड्रॉप कॉमेंट. इट रियली मोटिवेट्स अस अ लॉट ताकि हम आपके लिए ऐसे और वीडियोज लाते रहें. Okay, so the next question again is about tests. इसमें बहुत हमें careful रहना है. It's very important to remember the name of the different tests that are given and the people who develop them. अब इन्होंने हमें सीक्वेंस दिया है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, एंड दे हैव गिवन अस नेम्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट जो हमें उसी हिसाब से सॉर्ट करने हैं. ए. द बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ड्रॉ अ मैन टेस्ट. बी. रावन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, post block design test and group test of general mental ability. C. Bhatia's battery of performance tests, RPM, draw a man test, and D. None of the above. अब अगर हम देखें परफॉर्मेंस टेस्ट जो हमारा है वो तो ड्रॉ अ मैन टेस्ट है ही है, माने ए एंड सी में से एक करेक्ट है. उसके बाद वर्बल टेस्ट हम जानते हैं पहला वाला बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, यस. While Bhatia's battery of performance test in C is not a verbal test, it is a performance test. जिसका मतलब ये है elimination के through कि correct answer है A. Bihar test of intelligence is a verbal test, RTM is a non-verbal test, and draw a man test is a performance test. Next question. Which researcher standardized Binay's test in Urdu and Punjabi? Again, very important to learn the names of the different test developers. उन्होंने किस language में करा, कौन से test का rendition करा. तो the options for this question are Longan Mehta, B. Mahan Lobis, C. C.H. Rice, and D. Pramila Pathak. Answer is C.H. Rice. He standardized Binay ka test into Urdu and Punjabi. Next question. How might a child raised in a technologically advanced society demonstrate their intelligence differently compared to a child who was raised in a non-technological society? टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी का जो एक बच्चा होगा वो किस तरह से इंटेलिजेंस को डेमोन्स्ट्रेट करेगा. ए. बाय एक्सेलिंग इन ट्रेडिशनल स्किल्स जैसे फार्मिंग एंड हंटिंग. B. By displaying strong skills in abstract thinking and problem solving. C. By demonstrating social intelligence and adaptability in various cultural settings. Or D. None of the above. आंसर बहुत आसान है. स्ट्रॉन्ग स्किल्स इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकॉज इनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज में ज्यादा सराहा जाता है एज इंटेलिजेंस.
or as indicators of intelligence. Next question. What did Vygotsky believe about the relationship between culture and intelligence? A. Culture has no influence on intelligence. B. Higher mental functions are universal and not influenced by culture. C. Culture shapes higher mental functions and specifies successful intellectual development. And D. Culture only influences elementary mental functions and not higher mental functions. ओके तो वाइगॉट्स्काय जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अगेन कल्चर पे बहुत काम किया. सो ऑफ दीज फोर स्टेटमेंट्स व्हाट डिड ही बिलीव? तो द आंसर इज सी, बिकॉज वाइगॉट्स्काय का कहना था कि आपके जो एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हैं, सिंपल इंटेलिजेंस के फंक्शंस हैं, वो यूनिवर्सली सब में सेम होते हैं, पर कल्चर जो है, आप जिस कल्चर में रह रहे हो, वो इफेक्ट करेगा कि आपके एडवांस्ड मेंटल फंक्शंस या एडवांस्ड कॉग्निटिव फंक्शंस किस तरीके से डेवलप होंगे. तो इसीलिए इन्होंने कहा कि कल्चर जो है हमारे हायर मेंटल फंक्शंस को इफेक्ट करता है और सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को स्पेसिफाई करता है कि वो कैसा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रल इंटेलिजेंस? A. Entrepreneurial competence. B. Spiritual competence. C. Social competence. And D. Emotional competence. Integral intelligence is also Indian intelligence, जिसको हम बुद्धि कहते हैं. तो कौन सा इसका component नहीं है? The answer is B. Spiritual competence. बाकी सब इसके component हैं. Okay. Atul is able to monitor his own and others' emotions, discriminate amongst them, and he uses this information to guide his thinking and actions. He exhibits A. High intelligence quotient, B. High intelligence quotient and emotional quotient, C. High emotional intelligence, and D. High emotional intelligence but low intelligence quotient. ओके, सो अगर आप इसमें देखो, मॉनिटरिंग one's own and others' emotions, discriminating amongst them, and using this information to guide thinking and actions, ये सब जो हमारे सैलोविन पीटर का इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था, उसकी डेफिनेशन है. माने अतुल जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस में हाई है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आईक्यू भी दिया गया है, ईक्यू भी दिया गया है. अब आप देखो यहाँ पे आईक्यू की कहीं बात नहीं हुई, इंटेलिजेंस की कहीं बात नहीं हुई, जो ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस है. माने आपको बस कंफ्यूज करने के लिए आईक्यू दिया गया है, तो जितने भी ऑप्शंस में आईक्यू आ रहा है ना, उनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं. हाई आईक्यू लो आईक्यू बताया ही नहीं गया क्वेश्चन में. व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस इज दैट ही हैज हाई emotional intelligence. So the answer is C, high emotional intelligence. Next question. Shyam realizes that he likes to study physics even though he is unable to score well despite putting much efforts. On the other hand, he naturally excels at written language and elocution without much effort. While he has dash in physics, he is likely to have dash in language usage. Okay. A. Low aptitude, low interest. B. Low aptitude, high interest. C. High interest, high aptitude. And D. High interest, low aptitude. ओके, सो ये हमें क्या कह रहे हैं कि श्याम को फिजिक्स स्टडी करना पसंद है. दैट इज समथिंग दैट ही लाइक्स, ओके, दैट ही हैज अ प्रेफरेंस फॉर. दो वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे डिस्पाइट पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ऑन द अदर हैंड, लैंग्वेज में, एलोक्यूशन में, विच इज स्पोकन लैंग्वेज, उसमें बिना ज्यादा एफर्ट डाले ही इज नेचुरली वेरी वेरी गुड. Now, what this means is aptitude हमेशा is an inherent potential that you can furnish and something that you are actually naturally good at. You can also advance in it further. On the other hand, interest is a preference कि मुझे ये करना पसंद है और वो बदल भी सकती है. So we can see from the question that physics में he likes to study it but not able to do well. मतलब physics में high interest है but low aptitude है. On the other hand, language usage में क्या है? high aptitude है because he is naturally excelling in it. तो इसका जो हमारा आंसर होगा that would be C, high interest, high aptitude. फिजिक्स में high interest है और language usage में high aptitude है. The most distinctive feature of creativity tests is their cultural fairness, open-endedness, high reliability, multidimensional domains. Okay, so इसका आंसर है open-endedness because cultural fairness, reliability, multi-dimensional domains इनकी कहीं बात नहीं हुई है. The most stark feature of creativity tests is that they allow for several answers to open-endedness.
ओके, सो इसी के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सा रिवीजन चैप्टर 1 साइकोलॉजी का खत्म होता है। एंड थैंक यू फॉर स्टिकिंग टिल द एंड। अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आपको इसका पीपीटी जो है, इसकी पीपीटी का पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो चेक द डिस्क्रिप्शन आउट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द ट्विन ब्रोस चैनल, क्योंकि यहाँ पे वी मेक श्योर दैट सब बनेंगे टॉपर। Make sure you like the video and drop comments, any doubts or anything that you have to say. Thank you for watching. Let's meet again for the next chapter.